Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation once more, today I bring for all of you an interesting story once more. That name is Kaua Chale Hans Ki Chal, means one who blindly imitates other loses the faith. So, without getting late, let's start. जब कोई अक्षम व्यक्ति किसी समर्थ व्यक्ति से घमंड अथवा ईर्ष्यावश प्रतिस्पर्धा करता है तो उसके लिए कौवा चले हंस की चाल कहावत कही जाती है. द पर्सन हु इज अनेबल टू डू एनी वर्क बट ही obstinate to do such work pridely, so that is called this proverb. That name is one who blindly imitates others loses face. इस संदर्भ में एक महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आई है. Related to this proverb, and story has already written by this proverb in महाभारता. समुद्र के किनारे एक विशाल तथा भव्य मंदिर स्थित था. There was a famous and vast temple just near the seashore. दूर दूर तक लोग वहां दर्शन पूजन के लिए आया करते थे. The far one people used to come to take their blessings, who used to live far also. मंदिर के परिसर में एक वृक्ष था. There was also a tree in between the temple, जिस पर एक कौवा रहता था. In which the crow used to live. मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए खाद्य पदार्थों से ही वह अपना पेट भरता था. He used to fill his stomach by quitting the food of the devotees. मंदिर के कर्मचारी भी उससे परिचित हो गए थे. The workers of that temple were familiar properly with that crow. वे भी उसे खाने की चीजें दे दिया करते थे. They used to also provide the eatable things to that crow. अच्छा और पर्याप्त भोजन मिलने से वह खूब मोटा तगड़ा हो गया था. He was already and also very fat and potential just because of their providing food, which was provided by the devotees to that crow. अब वह अपने को अन्य पक्षियों से श्रेष्ठ तथा वशिष्ठ समझने लगा था. Now he was understanding to himself that I am the senior and most intelligent than other birds. अन्य पक्षी भी उसका सम्मान करने लगे. Another birds used to also respect them. इससे वह घमंडी हो गया. By that respect he got very pride. और सब पक्षियों की उपेक्षा की और सभी पक्षियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा. And he started to look to all of them as an enemy. एक दिन एक हंस कहीं से उड़ता हुआ आकर समुद्र के किनारे उतरा. One day a swan came flying near the seashore. श्वेत वर्ण के कारण उस उज्जवल हंस की सुंदरता को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे. Everybody used to praise him to see its whiteness and cleanality. उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई.
To see that swan, people used to have a large crowd. लोगों द्वारा हंस की प्रशंसा सुनकर उस घमंडी कौवे के मन में हंस के प्रति ईर्ष्या तथा क्रोध उत्पन्न हो गया. To listen so much proud about that swan, that crow got prided a lot, and he was very and got angered just because of their praising. वह हंस के पास जा पहुंचा और उससे बोला. He suddenly went near that swan and said to him, मैं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ. I am the greatest in the birds. और उड़ने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता. And nobody can fly as equal as I can and as fast as I can. मैं पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ. I am greatest than all the birds and creatures. और उड़ने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता. And nobody can do equality in flying from me. मैं 100 प्रकार की गति से उड़ सकता हूँ. I can fly just like 100 kinds of. तुम्हें मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करनी होगी. You will have to participate in the competition to fly with me. हंस बोला. Then the swan said, मैं मानसरोवर का रहने वाला हूँ. I am the leader of the मानसरोवर. वहीं जा रहा हूँ. I am just going to there too. मैं केवल एक गति से उड़ सकता हूँ. I can fly just like one kind. मुझे तुमसे प्रतियोगिता करने में कोई रुचि नहीं है. I'm not interested to compete with you. हंस के इस प्रकार कहने पर भी वह घमंडी कौवा नहीं माना. By saying this by the swan, that crow didn't listen to that swan's request. अन्य पक्षी भी उसी के पक्ष में बोलने लगे. And every bird has started to take in that one person's favor, which was said by the crow. तब हंस उसके साथ उड़ने को तैयार हो गया. By saying everyone, the swan finally decided to participate in that competition which was done by the crow. दोनों समुद्र के ऊपर उड़ने लगे. Both started to fly just upon the river. कौवा अनेक प्रकार की कलाबाजियां दिखाता हुआ उड़ रहा था. The crow started to show their potential, which was just like so many tricks. वह हंस के आगे निकल गया. After some time he crossed to that swan and came a little bit far. किनारे बैठे अन्य पक्षी हर्षवर्धन करते हुए उसका उत्साह बढ़ा रहे थे. The birds who were just sitting near the seashore were praising to that swan, and they all were encouraging to both of them. हंस अपनी स्वाभाविक गति से
उड़ रहा था. Then the swan was finally flying from that normal speed in which he used to fly normally. कौवे में अधिक दूरी तक जाने की क्षमता नहीं थी. The crow was unable to go so far. थोड़ी ही देर में वह थकने लगा. After some time he got tired. और उसके पंख जवाब देने लगे. And his feathers were finally got fatigued. अब वह उतरने के लिए जगह की खोज कर रहा था. After some time he was finally searching the place to get down. Forgetting town. किंतु समुद्र में उसे कहीं उतरने की जगह दिखाई नहीं दी. But he was unable to search the safe place for getting down. चारों ओर नीला नीला अथाह जल दिखाई दे रहा था. There was the darkest blueness surround him. वह समुद्र में गिरने लगा. Now suddenly he started to falling down into the vast sea. बार बार वह समुद्र में गिरने से बचने की कोशिश करता, मगर वह हर बार गिर पड़ता. Sometimes he used to save him from falling down in the vast sea, but unable to protect himself, and finally he fell down in that sea little bit. उसकी यह दशा देखकर हंस उसके पास पहुंचा. To see its condition, finally the swan reached near that crow, और बोला, and said to him, भाई कौवे, ओ crow, अब क्या तुम समुद्र के भीतर तैर कर दिखाओगे? Now will you show me to fly to swim into the sea which is so vast? कौवा बोला. Then the crow said, भाई हंस, ओ dear swan, मैं समुद्र में गिर रहा हूँ. I'm just falling in the vast sea. मुझे किसी तरह बचा लो. Just save me anyhow. मुझ में तुमसे होड़ करने की क्षमता नहीं है. I am just unable to compete to you, and I am unable to challenge you. मैं अपने बड़बोलेपन की सजा पा रहा हूँ. I am just repenting of my doings. हंस ने अपनी चोंच से पकड़कर उसे उठा लिया. After that swan lifted to that crow from its long beak, और वापस लौटकर समुद्र के किनारे लाकर जमीन पर रख दिया. And finally kept him just aside from the river, from the vast sea. सभी पक्षियों ने जब उसकी ऐसी दुर्गति देखी, and when every of the birds which was seeing to that competition as an audience, तो हंसने लगे. Then they started to laugh very badly, क्योंकि सभी उसके बड़बोलेपन से तंग थे. Because everybody was very disturbed from that crow's behavior. बेचारे कौवे को कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली. And after that the crow was too repenting from all of the creatures to whom he was
disturbing a lot. हंस पुनः मानसरोवर की ओर उड़ गया and after that the swan finally flight just on near the मानसरोवर. Finally, कौवे को अपने घमंड करने का फल मिल गया and after that the crow finally got the punishment of its bad doings. अब उसे समझ में आ गई थी. Now that crow finally understood that he was wrong. इसके बाद उसने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया. After that he was ashamed and didn't repeat such disgusting work from anyone. और सभी के साथ प्रेम से रहने लगा and started to living praisefully and lovingly from each and every creature. So students, I hope you would have enjoyed a lot from this story. The moral of the story is don't be over smart in each and every task, whether that task is good and that bad. So, see you in next video, Dear English. And don't forget to like, subscribe and share my all video and this one as well. See you in next video.